आज गुड मॉर्निंग नहीं, आज गुड आफ्टरनून। इट्स अराउंड 1 PM। कल रात को हैलोंग बे से लौटते लौटते बहुत लेट हो गया था। इट वॉज लाइक 9:30 10। तो और आज का मॉर्निंग में कोई प्लान था नहीं, तो नेक्स्ट प्लान जो हमारा है आज का जो थोड़ा प्लान है कि आई एम टेकिंग अ हाफ डे सिटी टूर ऑफ द हनोई सिटी। तो 1 बजे से चालू होना था, तो आई जस्ट स्लेप्ट टिल 11। उसके बाद उठ के थोड़ा नहा वहा के अभी रेडी हूँ। जस्ट चेकआउट किया। अभी ये मेरा लगेज यहीं पर है, बिकॉज जो क्या बोलते हैं आपका, मेरा फ़्लाइट है रात को 9:30 बजे है। तो आई विल बी आई हैव टू गो टू द एयरपोर्ट बाई व्हाट टू से अराउंड 7-7:30। और मेरा जो टूर है 4:30 तक है। तो मैं फिर वापस इसी हॉस्टल में आऊँगा। आगे यहाँ 2 घंटे जैसा वेट करूँगा इन द लाउंज एरिया। उसके बाद फिर आई विल मूव फॉर द एयरपोर्ट। तो आई आज हनोई का लास्ट डे। देखते देखते 4 दिन ट्रिप का निकल गया। आई स्टार्टेड ऑन 9, 9, 10, 11 to 9, 10, 11 and 12। दिस इज़ द 4th डे। नेक्स्ट स्टॉप इज़ द नांग। वहाँ पर रात को बहुत लेट हो जाएगा आज घूमने पहुँचने में। कल का देखता हूँ। दनांग का बहुत ज़्यादा कुछ प्लान किया नहीं हूँ। आई विल बी सेट स्टेइंग बाय द बीच एंड ऑल। बस वही करेंगे परसों, सॉरी नहीं कल एंड परसों का जो प्लान है अभी तक, तो प्राइमरी प्लान यही है कि आई विल गोइंग टू द गोल्डन ब्रिज। वही गोल्डन हैंड ब्रिज है, क्या नाम है उसका, आई विल गोइंग बाय माई सेल्फ। चलो देखते हैं वहाँ जाके क्या खबर है नहीं है। तो बट एक ट्रिप का 4 दिन ख़त्म हो गया एंड पता ही नहीं चला कैसे। आई एम रियली एन्जॉइंग द ट्रिप। अभी वेट करता हूँ, ये क्या 1 बजने वाला है। इट्स लाइक 5 मिनट्स लेटर को, तो अभी पिकअप आने वाला ही होगा। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे ट्रिप स्टार्ट होने के बाद। मेरे टूर गाइड का कॉल आया। बोला ऑन द वे, 2-3 मिनट में पहुँचने वाला है। जस्ट वेटिंग, completely ready. अच्छा ही लग रहा है। What's it here? Yeah, yeah. Nice video. My name is Ali. Excuse me, everyone. Now please stay here to take a photo and wait for me for a couple of minutes. I get the tickets first. I'll be right back. Okay. When waiting for me, you can take a photo here first, because we will not come back here. So when waiting, you take a photo first, please. This is the first temple. उन्होंने नाम क्या बोला गाइड में, आई डोंट नो। देखना पड़ेगा बाद में, फिर पूछते हैं नाम। दिस इज़ द एंट्री। हमारा गाइड अभी गया है टिकट लेने। एवरी पॉइंट है टिकट फॉर इट्स। तो यहाँ कुछ बाहर तो कुछ नहीं है खास, तो चलते हैं अंदर देखते हैं कैसा क्या। फर्स्ट स्टॉप, रियली एक्साइटेड। आज का हनोई का लास्ट दिन, स्टार्टिंग विद अ टेम्पल, religious place. Excited for that. Waiting for the guide to bring tickets and enter. Go inside here, please. You stop here, I give you the information about the complex. You stay around here with me, please. We get closer to my side here, please. Excuse me, everyone. Now, please stay here with me the few minutes. I would like to give you the information about the complex here. Then we go inside later.
But I want to remind you again, please help me don't go back the same way, okay? We will not go back to the same gate there. So if you want to take a photo somewhere here, please do it on the way, because if you don't do it now, it will miss something like that. And this one is the complex of two parts. The first part is one temple, and the second part was the first national university in Vietnam. You remember I explained before, I told someone here the different thing between the temple and pagoda. Remember that. In Vietnam, pagoda belong to the Buddhism. That's one is the Buddhism religions in our country. But temple belong to the Vietnamese culture. Outside the temple and pagoda look very similar. And this temple main gate very similar as pagoda main gate. In the pagoda, we saw many Buddha statues, but in the temple, you will not see any Buddha statue. Even on the main gate of the temple, you still see a lot of Chinese character, because before 17th century, we did not have writing system language. So we borrowed Chinese. We use them like writing system language in Vietnam before 17th century. And inside the temple here, when you go inside, you still see a lot of the offerings. Offering, I mean the food, some fruit, banana, apple, beer, water are offered by local people, but inside the building you will not see any Buddha statue. Inside the temple building here, you will see the human statue. Human statue inside the temple. You one more. Excuse me, everyone. You remember I mentioned before when you go inside the complex, you have one temple and here the temple site. But this one is not original building from 1070. This one was destroyed and it was rebuilt many times. And the latest time it was restored in 19th century. Now when you go to the temple, I mentioned before very similar pagoda. And at the main door underground, we still have to step over the legal step, because we still have to bow down the knee to make the head down to show the respect to someone who can worship inside. On the table right there, on the altar, on the tray, we still see a lot of the offerings, some food, the biscuits, the flour, the wine, the water. We offer the local people here. We offer the Buddha, we offer someone who is worship in the temple, some offering like that. On right there, I want to show you one fruit. You see the yellow one there? The big fruit. We call that one is Buddha hand, because the shape of that very similar to hand of the Buddha, with many things go there. They are fruit, but not the eating, no taste. We just use them like the decoration for the altar of the temple, of the pagoda. When you go inside the building here, you will not see the Buddha statue like something we saw in the pagoda in the morning. Inside the building here, you will see 5 statues in total. The middle one is Confucius. Confucius, he was the founder of Confucianism. He was born before BC. And 2 statues on the left side and 2 more statues on the right hand side. They are statues of 4 best disciples of Confucius. When you go inside. We are at our second location, Masons Centrally. I think it used to be a prison. अब प्रिजन वैसा कुछ रह नहीं गया है, जस्ट इज अ म्यूजियम. Now that gate is open.
Use me one we get closer to the side here, to the other place. In here, this one might be the prison museum. So we can speak too loud here, so anytime you get closer to the slide, you'll be better. This video one, you remember I mentioned before, French colonialists occupied Vietnam for about 96 years. The first attack of French in Vietnam in 1858 from Da Nang City. The French was forced to leave Vietnam the first time in 1942. And 4 years later, in 1946, they returned to occupy Vietnam again in 1946 with the help of the British, remember that. And it was defeated in Vietnam in the Dien Phu area in 1954. During 96 years, when they occupied Vietnam, they built a lot of the prisons in our country. And I told before, at the first moment when they came here, they replaced Vietnam by many trouble law. They put them by the customers. They did not allow Vietnamese people to go to school because they said, one stupid country, that's a country nobody knows how to write, how to read. They said they did not want to live, did not want to give any Vietnamese any chance to get education at that time. That's why they did damage all the school in our country. They destroyed all the school at that time. They built a lot of the prisons. Quảng Lo is one of them. You know, this prison name is Quảng Lo. But I call this one with a different name is Hanoi Hilton Prisons. I explain the reason why I call that later, okay? But this one name is Quảng Lo. Quảng Lo prison was built in 1896 by French. You know, French built this one to repress thousands of Vietnamese patriotics and revolutionary fighter. You know, when French left Vietnam in 1954, Vietnamese government used the prisons for domestic criminals in our country. But from 1964 to 1973, a part of the prison was used for capture American pilots who were shot down in the north of our country. One of them was John McCain, you remember? John McCain, he was a American president candidate in 2008, I mentioned before. John McCain was shot down into Tupilak Lake in 1967. He was captured and he was arrested inside prison here from 1967 to 1973. From 1964 to 1973, prison was used for capture American pilots. And in 1973, after Paris agreement between Vietnamese government and American government, they have to stop the war in our country. Only American prisoner was released Vietnam after 1973, and John McCain was the first prisoner who was released Vietnam in 1973. To have land for the construction of the prisons, French colonialists in the past they displayed on a 48 household in the village. You know, in the past, prison was located in the Phu Khanh village. Prison name was My Son Central. You saw at the main gate of that. My Son Central means central house, a traditional euphemism to denote prison in France. But the people used to call these prisons by its locations Hỏa Lò. Hỏa in the Vietnamese means fire, Lò means furnace. Because in the past, Phu Khanh was traditional craft village in Vietnam. The people they made the ceramic. You see a lot of the ceramic product. People in the village they make the ceramic from the clay. So every houses they have one furnace like this for baking the product. That's why the people they call prison here with the name Hỏa Lò, mean the fiery furnace, because it was located in the traditional. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
रिमेंबर कि पहला दिन जब मैं हैनोई आया था उसी दिन मैं यहाँ पर आया था, तो उस दिन मैं अंदर नहीं घुसा था। पर आज का जो मेरा टूर है, ट्रिप है, उसमें ये पड़ जा रहा है, तो इट वॉज गुड कि मैं उस दिन मैंने अपने पैसे वेस्ट ना किए यहाँ घुस के। दोबारा आके कोई जगह पर कुछ खास मज़ा नहीं होता। तो शाम रहता उस दिन। हाँ, एक चीज़ था कि उस दिन शाम था तो लाइटिंग एंड ऑल था, तो थोड़ा और अच्छा लग रहा था। आज लाइटिंग नहीं है। Con cho cha là cái này con ơi. We stop here with me the 3 minutes. And you know, this one is the Central Lake in Hanoi. We go to visit today. In the morning, I took the people to visit a different lake on that day, but it did not draw the tour in the morning. That's why you did not see them. And this one, the temple. And in Vietnam, the temple and pagoda are different. Look very similar outside, but in fact, they are not similar. When you go to pagoda, we see Buddha statue. You see the monk in the pagoda in Vietnam. But the one the temple. Inside the temple, you will not see any Buddha statue. You will not see the monk in the temple in our country. Inside the temple, you see the human statue, the king statue, queen statue, the national hero statue. And the second thing you see, the Chinese character, because in Vietnam before 17th century, we did not have writing system language. So we borrowed Chinese language. We use like writing system language in Vietnam before 17th century. And the temple name is Quan Kim, means invader. And the general said, we could not arrange them straight away. So he used 1,000 of the wooden sticks. He put them to the bottom of the river to become the big trap. When invader boat was on the trap, they could not see anything in the water. General made the tides moving down slowly. All the boat of the Mongolian invader was punctured, was sunk on the water, and we killed them very easily, very slowly on the water. And from that event, they never returned to occupy Vietnam. And the temple here was dedicated to him. Now we go inside here, please. Look to the left. Guys, when you go to the temple and pagoda, every temple, every pagoda you see on the ground have one little statue. आज का डेट टूर हमारा ख़त्म हो गया। मैं यहीं पर उतर गया, बस अभी मैं हॉस्टल नहीं जा रहा हूँ। अभी जस्ट एक का जूस पिया, अराउंड 20,000, दैट इज़ इंडियन रुपीज़ 60-70 कॉस्टली है, पर टेस्टी था, बहुत ज़रूरी था। सुबह से बहुत एनर्जी कम लगा था, तो अभी आई एम लुकिंग फॉर सम इंडियन रेस्टोरेंट। एक देखा यहाँ से 700-800 मीटर दूर है, वहाँ जाता हूँ, वहाँ कुछ खाऊँगा, बिकॉज तीन दिन से यहाँ का खाना खाते खाते अब रुक चुका हूँ। अब थोड़ा इंडियन लगेगा यार। चलो चलते हैं रेस्टोरेंट पर, जाके मिलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या खाना होना क्या है। कि फिर 6:30 बजे फिर उसके बाद खा के होटल 6:30 बजे, क्योंकि पिकअप है मेरा, तो तब तक तो 6:15 तक तो पहुँचना ही पड़ेगा। ठीक है, अब भाई बैठा हूँ, बोल सकते हो एक इंडियन रेस्टोरेंट में, जहाँ पर अपना इंडियन खाना मिल रहा है। बहुत मुश्किल से खोज के मेरे को आज 4 दिन बाद मिला। मैप में बहुत खोज के, इसका नाम है आपका PK स्पाइस रेस्टोरेंट।
मेरे बगल में एकदम बैठ के मटन बिरयानी खा रहा था, देख के तो बहुत टेस्टी लगा है। तो मैंने जस्ट एक बटर चिकन, नॉर्मल राइस एंड लेमन जूस मैंने ऑर्डर किया। देखते हैं, खा के देखते हैं कैसा है। एंड अगर अच्छा लगता है तो मैं डेफिनेटली ये प्लेस रिकमेंड करूँगा फॉर ऑल माई इंडियन टूरिस्ट एंड फ्रेंड्स कि जो जितना भी यहाँ का खाना खाए थोड़ा बहुत अपना इंडियन खाना ज़रूरत हो। ओके, वेडिंग बटर खाना ईगरली मुझे सारी देख के पानी आ रहा है, मतलब फ़ोटो में देख के पानी आ रहा है। अभी देखते हैं जब आता है तो क्या होता है। फूड वाज रियली नाइस, अच्छा था। बटर चिकन, लेमन जूस जो था वो बहुत बढ़िया था। राइस मेरे को लगा कि यहीं का लोकल राइस को बासमती राइस दिया है, और ओवरऑल फूड वाज नाइस, अ गुड टेस्ट ऑफ इंडियन फूड इन वियतनाम। थैंक यू। अभी जस्ट खा के निकला खाना यार, आपका 234,000 डोंग लगा। दैट इज़ इंडियन रुपीज़ में आप बोलो तो 750-800 रुपीज़ के आसपास। थोड़ा कॉस्टली खाना था, बट एक्सपेक्टेड है कि अपना यहाँ तो थोड़ा कॉस्टली रहेगा ही। पर मेन चीज़ है कि फाइनली कुछ इंडियन खाने का ये मिला, अपने आप को टेस्ट मिला, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। अभी हॉस्टल के निकलते भी ज़्यादा, कितना आपका 5 बज रहा है, हॉस्टल के निकलते हैं। हॉस्टल जाने में आधा घंटा लगेगा, तो उसके बाद थोड़ा अपने बाथरूम खुल जाता है, तो फ्लाइट पकड़ने के लिए निकलना है। ओके बाय, आपके होटल जाके मिलते हैं फिर आपसे। पिकअप हो चुका है मेरा होटल से, एक बड़ी इनोवा है ये मेरे लिए, यू कैन सी। अकेले बंदे के लिए एक बड़ी इनोवा, चलो बढ़िया ही है। पैसे में ज़्यादा दिया हुआ मैं नॉर्मल से ज़्यादा दे रहा हूँ इस बार, तो बड़ा गाड़ी तो होना ही चाहिए, थोड़ा आराम से सोते हुए जाया जा सके। जाके वहाँ पर बोर्डिंग पास में चेकिंग कर चुका है, बोर्डिंग पास में मोबाइल नहीं है, तो मोस्ट ऑफ मैं डायरेक्ट मैं सिक्योरिटी चेकिंग में चला जाऊँगा। लेट्स सी, और जाके देखते हैं कि कुछ मैं झंझट होता है कि नहीं, या फिर आराम से निकल पाऊँ। ओके, हनोई का एयरपोर्ट पर पहुँच चुका हूँ। ये पीछे यहाँ से एंट्री है। मेरा फ्लाइट 9:15 का है, अभी 7:15 हो रहा है, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट गया। चलिए चलते हैं अंदर, डायरेक्ट सिक्योरिटी चेकिंग में जाऊँगा, बोर्डिंग पास चेकिंग हो गया मेरा। चेकिंग मतलब सिक्योरिटी चेकिंग कर लिया बहुत ही जल्दी, कोई भी झंझट नहीं था। विदिन 5 मिनट्स सारे फॉर्मेलिटीज़ हो गए। पासपोर्ट देखा और मेरे पास जो पिक्चर था वो, एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ। फ्लाइट अभी बहुत टाइम है, फ्लाइट अभी 1.5 घंटे, 1.25-2 घंटे फ़्लाइट है बाद। गेट ना दे दिया, गेट नंबर 4 है, पर अभी तक ये नहीं बताया कि अभी तक बोर्डिंग तो चालू नहीं है। बोर्डिंग चालू है, आई थिंक बोर्डिंग 8:45 या समथिंग लाइक ऐसे चालू होगा। इट्स ओनली 7:35, बहुत टाइम है अभी। ठीक है, अभी चलते हैं, यहीं पर बैठेंगे। अच्छा जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ। डोमेस्टिक पार्क है, ठीक ठाक जगह है। बस वही बस छोटा सा, इतना छोटा सा डोमेस्टिक पार्टी इसमें छोड़ूंगी। मेरे को चाहिए सर, बंदे सो रहे हैं, देखो चार्जिंग को। दनांगा एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। फ्लाइट पूरी टाइमिंग पर ही थी, मैं कुछ भी लेट ना वहाँ उड़ने में लेट हुआ ना यहाँ पहुँचने में लेट हुआ। पहुँच गया हूँ, तो मैं देखा अभी ग्रैब से यहाँ से 4.5 किलोमीटर है, ग्रैब से ही मैं बाइक बुक कर रहा हूँ। इट विल बी कॉस्टिंग अराउंड 44,000 वियतनामीज डॉन्ग, बहुत ही चीप पड़ रहा है। चलिए अब निकलता हूँ यहाँ से, निकल के देखते हैं कहाँ से बुक किया जा सके। चलिए, कैश बुक कर दिया। चलिए लेट्स गो आउटसाइड। मोटर बाइक का पिकअप यहाँ से 2-4 मिनट दूरी पर है। चलता हूँ आगे, जा रहा हूँ किधर है दे मोटर बाइक का पिकअप, लेट मी सी। ये गाड़ियों का पार्किंग है, सामने से बाइक पार्किंग है। ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ, लेट्स सी। सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ बाइक पार्किंग यहाँ से है, बहुत ही चीप है। ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ, लेट्स सी किधर है मेरा बाइक।
सकूँगा, इतना ना मैं खोजना मुश्किल है. लेट्स सी, आई एम गोइंग.